Hello guys, you are welcome. This is the third lecture of NCERT series, Science and Technology, 6 to 12. Once again, I am telling you that this lecture is very beneficial because this series will be very much systematic with respect to the contents, and contents have been fully selected in the eyes of previous year questions and the very trend of the questions. जो कई वर्षों जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस आलोक में ये बनाया जा रहा है और फिर आगे क्या संभावनाएं हो सकती है क्वेश्चन को आने की, और साथ ही आपके स्टडी को भी इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा, राइट? सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी NCERT series 6 to 12 and lecture 3rd. Today in this lecture we will see the contribution of various scientists जो वैज्ञानिक हमारे हैं, ये फिजिसिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशंस है डिफरेंट फील्ड्स में, उसको मैं देखूंगा, हम लोग देखेंगे. सो साइंटिस्ट एंड देयर मेन कंट्रीब्यूशंस. इट्स नॉट फिजिबल टू प्रोजेक्ट हियर द टोटलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल साइंटिस्ट बिकॉज it would be a big data, right? Now I start with say this is the scientist, a scientist here, or here right hand side we will see the contributions, okay, scientist and contributions. To begin with, Archimedes Greek, belong to Greek, और द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्किमिडीज, आप जानते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, और लीवर का भी सिद्धांत आर्किमिडीज नहीं दिया था, रिमेंबर. सो द कंट्रीब्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड द प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, रिमेंबर. नेक्स्ट कम टू द Isaac Newton. He belongs to UK, United Kingdom, and his contribution all know laws of motion, गति का नियम, laws of gravitation, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते हैं, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी आविष्कार ये न्यूटन ने किया था. सो रिमेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, नेक्स्ट वन द लॉज ऑफ मोशन, and then the laws of gravitation, right? You know, this is number 3. Come to the Michael Faraday. He is from UK, United Kingdom, और इनका कंट्रीब्यूशन है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ, रिमेंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण. फोर्थ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. ही इज फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम. इनका कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, लाइट is as the electromagnetic wave. Okay, come to the 5. Heinrich Rudolf Hertz.
He is from Germany, and his contribution is the generation of electromagnetic waves. Generation of electromagnetic wave, विद्युत चुंबकीय तरंगों को जनरेट किया था. 6. Now come to the J.C. Bose. He is from India, well known, और इनका कंट्रीब्यूशन है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स. His contribution is in ultra short radio waves, right? Next come to W.K. Röntgen. He is from Germany and he discovered X-rays, remember. 8. Marie S. Curie. Curie का नाम आपने सुना है, फ्रॉम पोलैंड, और कंट्रीब्यूशन क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. नेक्स्ट है डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम, रिमेंबर. इट्स 9. एल्बर्ट आइंस्टीन. ही इज फ्रॉम जर्मनी, रिमेंबर. इनका कंट्रीब्यूशन यू ऑल नो, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, theory of relativity. Next, he has also given the explanation of photoelectric emission. एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था, कंफ्यूज मत होइएगा. 10. विक्टर फ्रांसिस हेस. he is from Austria. His contribution is cosmic radiation, right? 11. C.V. Raman. He is from India and he is known for the Raman effect. You all know Raman effect. For which he was also given the Nobel Prize in Physics. The Raman effect क्या है? Inelastic scattering of light by molecules. Remember, inelastic scattering of light by molecules, right? Next, come to Louis Victor de Broglie. He is from France. His contribution is wave nature of matter, right? Wave nature of matter was given by so-called de Broglie. Next, come to the 12. 13. M.N. Saha. He is from India and his research related to thermal ionization. Remember, M.N. Saha, thermal ionization. It's 13. Now 14. S.N. Bose. Satyendranath Bose. He is from India, all know, and his field is quantum statistics. Remember, quantum statistics. Next, 15. Enrico Fermi. Fermi is from Italy and he has given controlled nuclear fission. Remember, controlled nuclear fission किससे जुड़ा हुआ है? ये फर्मी से जुड़ा हुआ. 16. Next, come to the Heisenberg. Werner Heisenberg from Germany, remember, and his contribution is quantum mechanics and next uncertainty principle. Uncertainty principle, ये both the momentum and the position cannot be measured with the same accuracy. ये थोड़ा आप पढ़ेंगे भी. मैं पहले भी बताया था कि जितनी भी चीज़ें छूट जाएंगी फिर अलग से मैं लेक्चर दूंगा. इस बीच आप
इंथ्यूसिस्टिक तरीके से काफ़ी जितने भी इसमें क्लूज दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, याद तो कर लें और रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में सेल्फ स्टडी भी करें. ओके, नेक्स्ट कम टू द 17. एडविन हवल. Howell belongs to USA, United States of America, and his name is with expanding universe. याद रखेंगे कि यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ये कंसेप्ट हवल द्वारा दिया गया. नेक्स्ट 18. अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंस. लॉरेंस हैज डिस्कवर्ड साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन का डिस्कवरी किया इन्होंने. साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सेलेरेटर. इससे किसी पार्टिकल को हम एक्सेलेरेट करते हैं. 19. जेम्स चैडविक, वेरी इमिनेंट साइंटिस्ट. ही इज फ्रॉम UK and he has discovered neutron. Remember, next come to Hideaki Yukawa. Yukawa is a Japanese scientist and he has given the concept of nuclear forces, theory of nuclear forces. Next 21. Homi Jahangir Bhabha, right? He is from India, nuclear scientist, and his name is associated with basically the cosmic radiation, cascade process of cosmic radiation. Remember, cosmic radiation means cascade process of cosmic radiation. Next, Lev Davis Landau, very eminent scientist. His name is with theory of condensed matter and liquid helium. Remember. Next 23. S. Chandrasekhar, Indian scientist, and he is with the life and death of the star and the Chandrasekhar limit. So write structure and evolution of stars and then the Chandrasekhar limit. 1.44 mass of the sun. Next come to John Bardeen. He is from USA and he is associated with the theory of superconductivity, remember, and also with the transistors. Next come to C.S. Tonis. He is from USA and he has discovered laser, light amplification by astrometer emission of radiation, remember, and also his name is with Messer. Ernest Rutherford, he is from New Zealand and his name was associated with the nuclear model of the atom or nuclear atomic model. Next, Niels Bohr. Bohr is from Denmark and his name is associated with the quantum model of hydrogen atom. Quantum model of hydrogen atom. Then come to Galileo. He is from Italy and he has given law of inertia. That's all for the day. One more point has been left, okay. It would be 29, right? Abdul Salam from Pakistan, and his contribution is in the field of unification of the forces acting in the nature. Nature में जो बल काम करते हैं उसके unification का इन्होंने प्रयास किया and just unification of big and electromagnetic interaction. Remember, interaction of big and
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अब्दुल सलाम, अ साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान. So that's all for the day. Thanks for giving me a patience and listening.